Hello dear students, welcome to the class today. Children, we are carrying on with this chapter 1 in geography, conservation of resources. One of the very important chapters and one of the very important topics that we are discussing here is about first, in the last video, what we have done and where we have stopped. It was all about planning, resource planning. Today what we are talking is conservation of resources. Because what we have discussed in last class, what we tried to understand in last class, it was all about the planning. Resources are there. ऐसा नहीं है that we are lacking in resources. We have abundance of the resources, but then these resources needs to be utilized to the fullest. How are we going to utilize these resources? It is vital for any development activity, कोई भी activity हो, anything that is related to country's development, it is depending on resources. And irrational consumption, overutilization, it leads to socio-economic and environmental problems. हमने conservation के बारे में बहुत बार, every time when we talk about resources, we talk about the conservation of resources. And इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ, सबसे पहली चीज जो कंजर्वेशन के लिए है, स्टॉप ओवर यूटिलाइजेशन. हद से ज्यादा वी डू नॉट नीड टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज. It will lead to socio-economic got it? Socio-economic and environmental problems. And environmental problems. हमको इन सब चीजों से बचाना है अपने आप को. Environmental problems अगर हो गई, if environmental problems are occurring, dear students, it is really harmful for the humanity, for the civilization and for the forthcoming generations. Okay, so regarding conservation of society resources, Gandhi ji had given a very nice statement. Based on this statement, questions are asked in board. Yes, dear students, questions are asked in board based on this statement, that is, there is enough. This is the statement said by Mahatma Gandhi. There is enough for, बहुत ज़्यादा है. We have got enough resources for everybody's need, for everybody's need, but not for everybody's greed. लालच हर एक चीज के पतन का मतलब फॉर the finishing of the life of the people and for the betterment of the society, we have to see that we are not overutilizing the resources. Greed, पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगानी है. अरे बाबा, आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, but then you have to see that when you are laying down these industries, when these are being these industries are coming into action, तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए. Nobody should be in loss.
and greedy, selfish individuals are there who are exploiting the nature, modern technology, and that was the root cause for resource depletion. Resources दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है, दिन पर दिन it is decreasing. Depletion is happening at the global level, at a very high level. So he was against the mass production. इतना ज़्यादा production that is happening, he wanted to replace it with production by masses. ठीक है? Okay. Said by महात्मा गांधी. इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा. When you are talking of the overutilization of resources, then conservation of resources, then you need to talk about it. इसके बारे में बात करना आपको जरूरी है. And he was against mass production. He was against mass production. Mass production, हद से ज्यादा किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है? Mass production नहीं होना चाहिए, but wanted to replace it with production of masses. But wanted to replace it with production of biomasses. First, you understand the meaning of mass. I hope you all understand the meaning of mass. काफी सारे लोग मिलके प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं. The people who are involved in the production activity. अरे इतना सारा प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर है? Many a times we are producing more than it is needed, then it leads to wastage also. काफी सारा सामान वेस्ट हो जाता है. Got it? तो institutional ways, the changes have been happening, where seminal contribution is happening on the resource conservation, global level पे Brundtland at global level, Brundtland Wood Commission. Please understand, Brundtland Commission report was released. Commission report released in Brundtland Commission report that released in 1987. 1987 it has released, it introduced the concept of sustainable development. इन्होंने कहा, the commission report that was submitted, it was very clearly said that if at a global level efforts are not made to save the environment and to save the pollution levels, to decrease the pollution levels, to make arrangements for the increasing population, a time will come when the conditions will be uncontrollable. काफी सारी चीजें ऐसी होगी जिसके ऊपर कि हमारा कोई जोर नहीं होगा, हम इसको रोक नहीं पाएंगे. Got it? So we need to take proper care of that. Land resources are there on this land that we are living. Please understand that जहाँ पे हम रह रहे हैं, these land resources, conservation के लिए some methods are there. अब we need to understand the kind of ये सारे जो institutional changes that have happened, इन institutional changes में आपको ये सारी चीजें mention करनी है. Got it? Because if you are not mentioning about all these, your answer remains incomplete. Now हमारे इंडिया में कितना सारा लैंड है, the land resources that we are having, how are we utilizing these land resources? हम इस लैंड पे रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग, तो नेचुरल वेजिटेशन, द लैंड इज ओनली सपोर्टिंग them.
The land where we are living in, it is a natural resource of importance. Natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. So, land is an asset. जमा पूंजी है, please understand. Asset, land is an asset of a finite number of people. काफी सारे लोगों के लिए finite magnitude. It is important to use it for various purpose. Careful planning के साथ हमको use करना है. We have to see, okay? Magnitude means काफी सारे लोगों के लिए. For large number of people, land is an asset. So it is important to use the available land for various purpose. So it is important to use this land for various पर्पस. बहुत तरीके की चीज़ों के लिए इस लैंड को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड विथ केयरफुल प्लानिंग. आप यूज करते हैं लेकिन अगर प्लान करके यूज नहीं करते हैं ना, देन यू कैन ऑल्सो मिस यूज द थिंग्स. लॉट ऑफ प्लानिंग. अभी इंडिया में वी हैव लॉट ऑफ लैंड, जो बहुत सारे वेरियस रिलीफ फीचर्स आर देयर. माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स. इंडिया हैज वेरियस रिलीफ फीचर्स लाइक, बहुत तरीके की चीजें हैं ना, लॉट ऑफ काइंड ऑफ लैंड्स दैट वी हैव. तो यहाँ पे इंडिया में वी हैव माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, हर तरीके की चीजें जो अवेलेबल है, एंड आइलैंड्स. %43 of land area is plain. 43% of land area is plain. ठीक है. देयर इज फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री. माउंटेन्स एग्रीकल्चर हो सकता है एंड इंडस्ट्रीज कैन बी लेड डाउन इन दिस फ्लैट एरिया, plain area. 30% of the total surface area of the country has perennial flow of rivers. कभी कभी rivers flow करते हैं all through the year. नदियों में पानी है. So mountains are 30%. Mountains account for 30% of land region of land. जितना भी जमीन है हमारे पास, आई मीन वॉट एवर लैंड रिसोर्सेज दैट वी हैव, उसमें 30% इज माउंटेन्स. एंड माउंटेन से क्या हो रहा है? पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स, लगातार नदियां बह रही हैं. ओके, तो अब इसमें क्या होता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम. कैसे? यस, ऐसे. बिकॉज वॉट हैपन्स इज कि tourism and ecological aspects, it's very important. Tourism and ecological aspect, it is very important. Okay, 27% of country is plateau region.
जिसमें कि रिच रिजर्व ऑफ मिनरल इज देयर, फॉसिल फ्यूल इज देयर एंड फॉरेस्ट इज देयर. 27% प्लेट्यू रीजन, काफी एरिया है विच इज प्लेट्यू रीजन. सो 27% इज प्लेट्यू रीजन. काफी मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉरेस्ट है, which has rich minerals, fossil fuels and क्योंकि प्लेट्यू रीजन जो है ना, प्लेट्यू रीजन इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट रीजन इन इंडिया. सबसे पुरानी जगह है जहां पे कि आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशियस चीजों से रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल हैं. रिच रिजर्व ऑफ मिनरल इज देयर, फॉसिल फ्यूल इज देयर एंड फॉरेस्ट्स आर देयर. All these arrangements are available in abundance. Correct, children? So this is there. Ab, what we need to understand is that how this land is being utilized. Land तो हमारे पास इतना है. Are you understanding? So we have this land resource ये है which is divided into 43%, 30% and 27%. 100% हो गया? Yes. अब रिसोर्स तो है, लेकिन इस रिसोर्स का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? हाउ आर वी यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेस? व्हाट आर द वेरियस यूटिलाइजेशन मेथड्स? उसको यूज करने का अलग अलग तरीका कैसे है, कैसे यूज करेंगे? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज लैंड यूटिलाइजेशन. How are we using this land? So first thing, land में हमारे पास क्या है? That is the forests. Got it? जंगल है, ठीक है. जितना we are talking about the 100% land in general. कुछ लैंड ऐसे हैं जहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता है. Land that is not available for cultivation. कल्टीवेशन खेती नहीं हो सकती ऐसी लैंड पे. कौन सा लैंड है? ओके, चलो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. बंजर जमीन, बैरन लैंड, बैरन एंड वेस्टलैंड. गॉट इट? इसके बाद वी हैव जहां पे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर नॉट हैपनिंग, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, लैंड यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल प्रोसेस. लाइक building road, factories, etc. Building road, factories, etc. अब कल्टिवेबल लैंड जो कि मतलब जहां पे कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैन नॉट हैपन. देन वी हैव अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. फैलो लैंड वो है जहां पे कि कल्टीवेशन हो सकता है बट इट इज नॉट यूज्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो देयर आर अदर, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज अनकल्टिवेबल लैंड. ओके, इसमें क्या है? कल्टीवेशन कैनॉट हैपन, एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस कैनॉट हैपन. सो पैस्चर लैंड इज देयर, ग्रेजिंग लैंड इज देयर. सो पैस्चर लैंड एंड ग्रेजिंग लैंड. अरे भाई, करोड़ों में अगर इंसान है तो लाखों में जानवर भी तो है, इनका खाना कहाँ से आएगा?
So we have the pasture land and the grazing land. Then we have tree crops. पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, फलों के पेड़ हैं, ठीक है. एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, जहाँ पे खेती हो सकती है लेकिन अभी तक खेती हुई नहीं है. ओके. एंड देन वी हैव फैलो लैंड. फैलो लैंड जो काफी दिन से इसी तरह पड़ा हुआ है, खेती हो सकती है लेकिन उसकी खेती आज तक हुई नहीं है. सो वी हैव द फैलो लैंड. गॉट इट. देन यू हैव, इसके बाद जो बचता है दैट इज द नेट सोन एरिया. एग्रीकल्चर जहां हो रही है. एंड ये इंडिया में कितना है? इंडिया में लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल एरियाज आर देयर. दिस लैंड इज, दिस इज कॉल्ड एज, क्योंकि ये एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है इसी के ऊपर हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है. नेट सोन एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस क्रॉप एरिया. खेती जहां पे हो रही है, अनाज जहां पे उगाया जा चुका है. सो ग्रॉस क्रॉप एरिया. गॉट इट चिल्ड्रन. इंडिया में हाउ आर वी यूजिंग दिस लैंड? What is the land use pattern in India? Let's see it in the book itself. Come on, let's see. So students, today we have discussed about the conservation of resources. एक बारी एक दो points I wanted you all to mark. These were for any developmental activity. लेकिन क्या था कि irrational consumption, over utilization के वजह से conservation इस resources जो है वो deplete करते हैं. यहाँ पे गांधी जी का स्टेटमेंट है विच यू हैव द बुक, प्लीज़ मार्क दिस. द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स पैसा बनाने के चक्कर में पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब कर देते हैं. एंड द पीपल आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ कॉमन मैन. आम आदमी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. नुकसान होता है तो सबका होता है. When it happens, in general it happens for everyone. So all these people and their exploitative nature of modern technology, that was the root for resource depletion. Another thing children, this paragraph is very important where the philosophy had changed the way of working of the people. गांधीयन प्रिंसिपल एक तो हमने बात कर ही लिया. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये बुक का नाम याद रखना है, वेयर दैट स्मॉल इज ब्यूटिफुल. ये मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी. चिल्ड्रन, टुडे वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डायग्राम. टुडे वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द ग्राफ दैट इज देयर, which is talking about the land resources that are available. 43%, 30% and 27%. Children, with this kind of data, what happens कि this kind of a diagram is important. इस तरह का डायग्राम बनाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, where you have the plains, the mountains and the plateaus. Okay. India has got these important relief features. After that, what we have discussed and what we have decided was the relief features that are there in India. Mountains, plateaus, plains and islands. India में there are variety of relief features. जिसमें we have the mountains, we have the plateaus, plains and islands. 43% of land में क्या था, the area plain है and it is providing facilities for agriculture and industry. Mountains are accounting for 30% of the total surface. In mountains में 30% surface is there and 27% of the area is, got it? Rich reserve of minerals is there in the plateau region. Plateau region में ना
मिनरल्स आर अवेलेबल इन अबंडेंस, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं हमको. ओके, देन हाउ आर वी यूटिलाइजिंग द लैंड. कुछ लैंड फॉरेस्ट है, कुछ लैंड इज अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन विच इज़ नॉट अवेलेबल. तो देयर इज सम वेस्ट लैंड. Then we have non-agricultural use के लिए buildings are there, roads are there, factories are there. तो the uncultivated land that is there, उसमें fallow land is already excluded. Permanent pasture land is there, grazing lands are there. तो lands that are there under miscellaneous tree crops, groves which are not included in the net zone area. Now what happens, cultivable waste land that is there, uncultivated जो land को छोड़ा गया है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे भी बहुत सारा land जो है वो नहीं यूज़ हो रहा है. Children, this is the 2 pie chart that 61 से 1415 में the changes had happened in the land use pattern. Land is utilized. ठीक है. सो डिफरेंट नंबर्स आर हियर चिल्ड्रन. ये नंबर्स आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन हाउ इज इट कलरफुली एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, ये कलर्स का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है. हाउ मच इज द फॉरेस्ट लैंड, द बैरन लैंड, द एरिया अंडर एग्रीकल्चरल एरिया, देन यूजेस current fallow land, fallow other than the current fallow land, culturable wasteland. ये सारे जो land forms हैं, when we are discussing about it, when we are seeing it, तो आपको there would be a comparative study between 1960-61 and 2014-15. Got it children? तो इसको आपको अपने नोटबुक्स में बनाना है. I am sure you might have made it. इसको आप बना लीजिएगा और इसका explanation is mentioned here very clearly. The explanation of that pie chart. तो अगर आप pie chart अच्छे से कर लेंगे तो you can explain it very well in here in down. Then we start with a new form. We start with a new discussion, that is land degradation and the conservation measures. कैसे लैंड डिग्रेड होता है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, दैट इज वॉट इज समथिंग मेंशन्ड हियर. गॉट इट चिल्ड्रन? सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास चिल्ड्रन. टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. गॉट इट चिल्ड्रन? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू.